Hello everyone, I am Usha Rani, social science teacher of Noble Public School, and let's start our first lesson. I am going to teach social science. Let's our first class, online class. This is our social science textbook for standard 9th, and in our subject, let's see the index. In social science, generally there are 3 parts. Here in the book it is given as mentioned unit 1, unit 2 and unit 3. In the unit 1 it says about history, 20th century, the world and India. And unit 2 it says about our government, making of modern nations, about our government, how to form the government, etc. And unit 3 it says about geography, India and its land and people. So total we have 3 parts: history, civics and geography. Okay, let's now start our history first lesson. The name of first lesson is Rise of British Rule in India. And you know already, India was ruled by Britishers nearly 150 years. Then afterwards we got independence from them 1947 August 15th. But how did they reach India and why did they reach India? This is the question. So let's start our lesson. In the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious inheritance. Due to the economic prosperity and cultural inheritance, people from different nations of the world came to India. And you have studied already in 8th standard about this same lesson, previous lessons, because India is called in olden ancient period, India is called a golden bird, means सोने की चिड़िया. क्यों ऐसा बुलाते थे? क्योंकि उस समय पे हमारा देश में एकेडमिकली एंड कल्चरली, रिलीजियसली बहुत आगे है, इसलिए ट्रेडिंग के लिए विदेश वाला भी यानी यूरोपियंस, मेनली यूरोपियंस हमारा देश आते थे, इसलिए दे कॉल्ड इंडिया इज ए गोल्डन बर्ड. And there was a lot of demand for the Indian spices, muslin, silk cloth, indigo, etc. in the European countries. So in those days हमारे देश में से जो चीज़ें हैं बहुत ट्रेडिंग के लिए फेमस है, उसमें से एक इंडियन स्पाइसेस यानी हम लोग जो मसाला में यूज़ करते हैं स्पाइसेस, पेपर एक्सेट्रा, एंड मसलिन. मसलिन मीन्स ए फाइन थिन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ. तो फाइन थिन कॉटन क्लॉथ इट इज़ फेमस. And next silk cloth, silk means reshmi cloth, and indigo is a color to dye the cloths. It is also plants. These things are very famous in those days for European countries. Trade between India and Europe was carried out through land route and sea route, and at the center of these routes was Istanbul. In those days this trade was carried out through land route and sea route. Mainly sea route was passing through the Istanbul, Constantinople in Turkey, it is the center, and land route from the Middle Asian countries. But in 1453 Turkish Muslims conquered the Constantinople, means Istanbul. At present it is called Istanbul. In those days its name is Constantinople. They conquered from the Christians. Means Turkish Muslims conquered means जीत लिया है. Christians का उस वाले तो उन्होंने जीत लिया in 1453. Then after they closed the sea route for the Europeans.
जब टर्किश मुस्लिम्स जीतने के बाद ये जो सी रूट है यूरोपियंस के लिए बंद कर दिया गया. सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस, द यूरोपियंस फेल्ट कंपेल्ड टू डिस्कवर ए न्यू सी रूट. सो जैसे ये सी रूट बंद हो गया है, उनकी स्पाइसेस नहीं मिल रहा है बिजनेस के लिए, और उनकी इसका वजह से यूरोपियंस को एक इंडिया के लिए एक नया सी रूट डिस्कवर करने की ज़रूरत पड़ी. सो एन एरा ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरीज बिगेन. इस प्रकार जो नया डिस्कवरीज सी रूट के लिए, एक नया डिस्कवरी के लिए न्यू एरा स्टार्ट हो गई. एंड डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया. ये इंडिया के लिए सी रूट कैसा डिस्कवर किया है. विथ द इंस्पिरेशन, encouragement and economic help from the Portuguese king Prince Henry, some brave people began efforts to discover new sea route. और उस समय पे सभी जगह किंग्स का चल रहा था, किंगडम्स. उस समय पोर्चुगीज मीन्स द नेम ऑफ द कंट्री पोर्चुगल. ये पोर्चुगल का राजा पोर्चुगीज किंग प्रिंस हेनरी, उन्होंने ये नया सी रूट डिस्कवर करने के लिए कुछ लोगों को, ब्रेव पीपल को encourage किया है, इंस्पिरेशन किया है, और इकोनॉमिकली भी हेल्प किया है. और many great men tried to discover sea route to India, namely Bartholomew Dias, who discovered the Cape of Good Hope. उनमें से बहुत सारे ग्रेट लोग इंडिया के लिए सी रूट डिस्कवर करने निकल गए, कोशिश किए थे. उनमें से एक उनकी नाम है बर्थलोम्यू डियास. उन्होंने एक केप ऑफ गुड होप, ये अफ्रीका में है, मैप में दिखाई देते हैं आपको, देख सकते हैं, वहाँ तक का सी रूट डिस्कवर किया है. विथ द इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस बिगन हिज एडवेंचर ऑफ डिस्कवरिंग ए न्यू सी रूट विच अगेन केम टू ए स्टॉप एट एन आइलैंड प्रेजेंटली नोन एज वेस्ट इंडीज. नेक्स्ट उसके बाद स्पेन का राजा का हेल्प से, किंग ऑफ स्पेन मीन्स स्पेन का राजा का इकोनॉमिक हेल्प से, क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑलरेडी यू आर फेमिलियर विथ दिस नेम, क्रिस्टोफर कोलंबस ने उनके एडवेंचर्स ऑफ डिस्कवर चालू किया. सी रूट डिस्कवर करने के लिए उनके एडवेंचर्स चालू किया है. और उन्होंने भी एक नया आइलैंड तक आ गया है, और उस आइलैंड का एट प्रेजेंट नेम है वेस्ट इंडीज़, और वो है अटलांटिक ओशन में है, सिचुएटेड इन द अटलांटिक ओशन. Columbus, who had believed throughout his life that he had discovered a new sea route to India, had actually discovered a new land. But Columbus ने सोचा है ये जो उन्होंने एक आइलैंड डिस्कवर किया है, न्यू लैंड, इन्होंने सोचा यही इंडिया है. और he discovered a new sea route to India. He thought throughout his life, means पूरा उनकी लाइफ में यही सोचा था उन्होंने, ये इंडिया का नया सी रूट है. But actually it is not India, it is a new land. इट इज़ कॉल्ड नाउ अमेरिका, अमेरिकन कॉन्टिनेंट. यानी एक नया लैंड ही डिस्कवर किया है कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस. और ये क्लैरिफिकेशन बट उनको नहीं पता है, उन्होंने एक नया लैंड डिस्कवर किया ये नहीं पता, वो सोच रहे हैं इंडिया की न्यू सी रूट ढूंढ लिया. बट आफ्टर सम टाइम एक इसका क्लैरिफिकेशन दिया गया है. दिस क्लैरिफिकेशन वॉज मेड बाय अमेरिको वेस्पुसी. दिस न्यू लैंड बिगन टू बी नोन एज अमेरिका. ये जो क्लैरिफिकेशन मतलब ये नया लैंड है, ये इंडिया नहीं है, ये वाला क्लैरिफिकेशन अमेरिको वेस्पुसी ने दिया है. ये यूरोपियन एक्सप्लोरर है, ये भी उन्होंने बता दिया है ये सच, इसलिए उनके नाम से ये लैंड को अमेरिका बुलाते हैं. सो दिस इज़ वन पॉइंट बाय हुज नेम अमेरिका वाज कॉल्ड. एंड यूरोपियन एक्सप्लोरर अमेरिको वेस्पुसी, विथ हिज नेम अमेरिका इज नेम्ड आफ्टर हिज. And this is a map you can see in your textbook also. Next, the Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea route to India in 1498. In this way, they started to search new sea route to India, but they discovered a new land. It is called America. But next, Portuguese sailor. Portuguese means already I said Portugal. It is the name of country, Portugal, European country. And Portuguese sailor Vasco da Gama, he discovered the sea route to India in 1498. This is, you can underline it.
means who discovered sea route to India and when. In 1498, Vasco da Gama, Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea route to India. When he reached Calicut in the western coast of India, and he reached Calicut. Calicut means at present it is in Kerala. You can see in the map, western coast. First he reached Calicut. He was welcomed by the king Jamorin and allowed to carry out business there. When he reached Calicut in west part of India, that time there king Jamorin, he welcomed and he gave the permission to carry the business there. Thus, this is considered as an important event in the world, as this opened the doors for other Europeans to come to India. So, this event is very important to the other world because the trade between India stopped due to Istanbul route closed. So, next they discovered another route. So, again they started their business from Europe to India. So, this is an important event in the world. This is opened the doors for Europeans to come to India. Which event discoveries the new sea route to India? Who discovered? Vasco da Gama, Portuguese sailor Vasco da Gama. And when he discovered sea route to India? 1498. Okay. In this way, sea route to India was discovered. Then, arrival of Europeans to India. यूरोपियंस इंडिया में कैसा पहुंच गया? यूरोपियंस मीन्स यूरोप में से अलग अलग नेशंस लाइक इंग्लैंड, पोर्चुगल, स्पेन, डच. So let's see then the Portuguese were the first to arrive in India for trade after the discovery of the sea route to India. So this is also main point. Who reached India first? First who arrived? Arrived means Ponchana. Who arrived to India first to trade after discovery of the sea route? Portuguese. Portuguese means already we said from Portugal. Portuguese were the first to arrive India for trade. And within a span of 100 years, the Portuguese took control of several territories like Diu, Daman, Goa, Cochin, Malacca, etc. They nearly 100 years, within 100 years, and they got the control. Territories means areas in the business, and these areas fully they are in their control like Diu, Daman, Goa, Cochin, Malacca, etc. Inspired by the Portuguese success in trade, the Dutch from Holland and the Danish from Denmark arrived in India for trade. Then with the inspiration of Portuguese means Portuguese इंडिया आके इतने सालों से अच्छा बिजनेस कर रहे देख के उनकी इंस्पिरेशन से अदर कंट्रीज, अदर यूरोपियन कंट्रीज means Holland, from Holland people are called Dutch, like Indian people who lives in India they are called Indians, like that Holland who lives in Holland, citizens of Holland are called Dutch. So Dutch, the country of citizens of Holland, and Danish means citizens of Denmark. They also arrived in India for trade. And now three countries: Portugal, Portuguese; from Holland, Dutch; and from Denmark, Danish. These three arrived in India for trade. The English traders established the East India Company to carry out trade with India. Then later, English traders means Britain. At present, we are calling Britain UK. They also English traders also they started one company for trading, East India Company. It is called East India Company. In 1600 AD, when Queen Elizabeth of England gave the permission to the East India Company to carry out trade with the eastern countries, and that time England की Queen Elizabeth है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दिया है इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए, टू कैरी आउट ट्रेड विथ ईस्टर्न कंट्रीज. The first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in Surat. After the permission of Queen Elizabeth, this East India Company ship पहला शिप इंडिया में पहुंच गया है और उनकी शिप का लीडरशिप है कैप्टन विलियम हॉकिंस
और उन्होंने इंडिया में सूरत, इट इज़ इन गुजरात. एट प्रेजेंट वी आर ऑल्सो कॉलिंग सूरत, सेम थिंग. They first arrived, East India Company first arrived in Surat. This point you have to note down. But due to the dominance and opposition from the Portuguese, they were not allowed to establish their trade there. Already Portuguese nearly more than 100 years they are here doing business. That's why Portuguese dominance ज़्यादा होने की वजह से, उनके अपोजिशन से और इनके बिजनेस के यहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया. They were not allowed to establish their trade. But finally the East India Company got the permission from the Mughal Emperor Jahangir, and thus the British East India Company established its first trade center in Surat in 1613. But in 1600 में परमिशन दिया क्वीन एलिजाबेथ, उनका फॉलोशिप आया है, बट उनको यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए परमिशन नहीं दिया है. बट बाद में लेटर ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन दिया गया है. उस समय मुगल एम्पीरियर मीन्स द नेम ऑफ एम्पायर, मुगल साम्राज्य, डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी इज किंगडम. उनका एम्पायर मीन्स किंग ऑफ किंग. जहांगीर, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड करने के लिए परमिशन दिया है, वो भी सूरत में 1613. दिस ईयर एंड यू हैव टू नोट डाउन. Initially, the company established its trade centers in Surat, Bharuch and Ahmedabad. So, in this way, East India Company, its company business trade start किया है. उनकी centers Surat, Bharuch and Ahmedabad. These three places are in Gujarat. Means East India Company first their trading started in Gujarat itself. 1613 in the year 1613. First they reached Surat, then Bharuch and Ahmedabad. These three are their trade centers. But due to the strong presence of Marathas in this region, the company sensed danger to its existence and hence moved towards the south and east directions, where they set up their centers in Machilipatnam. It is in Andhra Pradesh. But later here they are started their trade centers. But in this area, Marathas' presence is very strong, so they thought it is very dangerous for them here too. That's why means they don't get many profits. That's why they move towards south and east directions. In south, Andhra Pradesh, at present Andhra Pradesh, Machilipatnam, it is also seaport. There they started their center, and another center, St. George, Chennai, means Tamil Nadu, and Fort William, Kolkata, West Bengal. This Andhra Pradesh and Chennai in the south, and Kolkata, Fort William, it is in east. These directions they moved for their business. Mumbai became their headquarter in 1687. Then later in 1687 they started business in 1613, but 1687 means nearly 60-70 years after they started their headquarter as Mumbai. Mumbai means now it is called Mumbai, but that time Bombay. It is their headquarter for trading. French East India Company arrived to India for trade in 1668. This is British East India Company first to India came, but later in 1668 French East India Company, another East India Company, but it is French. French means France. From France, another East India Company, they arrived for India trading in 1668 and eventually set up their trade centers in Mahe, Karaikal, Pondicherry. Pondicherry means at present it is called Puducherry, Chandranagar, Machilipatnam, etc. And they started their trade centers in these places, Mahe, Karaikal, Puducherry and Chandranagar and Machilipatnam. In these places, French East India Company trade centers are set up. In the 18th century, the English and the French were constantly busy establishing their rule in the entire world. So, in the 18th century, that time after French East India Company, then British East India Company and French East India Company, they both are busy to establish their rule in the entire world for the trading and conquering more territories. Not only trading, they ruling also to total entire world, means all other countries also, to conquering more territories. ज़्यादा देश में
उनकी जीतने के लिए उनके चल रहा है उस समय 18th सेंचुरी में बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच. Between 1746 and 1763, there were 3 Karnataka wars between the French East India Company and the British East India Company. Means 1746 से लेकर 1763 के बीच के समय में ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 3 कर्नाटका वॉर्स हुआ है दोनों कंपनी के बीच में. इन इंडिया विच द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट. ये तीनों वार में से टोटली एट लास्ट इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गया. थस मेकिंग इजी द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ये तीनों वार में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक्सपेंशन इंडिया में इजीली कर लिया. दिस इज एट द एंड ऑफ द बैटल फॉर पावर द पोर्चुगीज वर लेफ्ट. तो ये जो 3 वार्स में पोर्चुगीज हारने के बाद उनके पास इतना ही एरियाज बचा है लेफ्ट विथ डायू, दमन, गोवा, वाइल French had their trade centers at Chandranagar, Mahe, Karaikal and Pondicherry. Meanwhile, the Dutch had to leave forever. ऑलरेडी पोर्चुगीज जो फर्स्ट अराइव्ड है, फर्स्ट यूरोपियंस अराइव्ड टू इंडिया पोर्चुगीज, उस समय उनके पास ओनली डायू, दमन, गोवा 3 प्लेसेस है. और देन फ्रेंच अपने ट्रेड सेंटर्स को चंद्रनगर, माहे, करकल एंड पौंडीचेरी तक ही है उनकी ट्रेड सेंटर्स. और द डच हैड टू लीव फॉर एवर. और इनके अलावा जो डच आए हैं हॉलैंड, उन लोगों तो पूरा देश छोड़ के जाना पड़ा. एंड दिस ओके for today's this is our lesson, and remaining lesson next day we will see, and you again read the lesson thoroughly. Okay, thank you.